Your name? Aditya Shankar, Anup Ranjan, Bhavani Shankar Mishra, Binuri Baral. Present sir. तुम कहीं लास्ट क्लास नथिल बिनोरी? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो काट दीजिए सर. अच्छा अच्छा. विश्वजीत राणा, धनंजय दास, धनंजय absent. जगदीश खिलार. Yes sir. तो धनंजय अच्छी बे. धनंजय कहीं पकोनी प्रेजेंट. जीवन ज्योति जेना. Present sir. ज्योति अमृत मल्लिक. Present sir. राजदीप महांती, रोशन कुमार, रूपाली साहू, सौरव महांती. Present sir. सौरव महांती प्रेजेंट. श्रीनिवास दे. Sir. श्रीनिवास दे absent. शुभम कानूनगो. Present sir. Present sir. शुभम कानूनगो प्रेजेंट. Present sir. ओके. शुभस्मिता बेहरा. absent. श्वेतालीन प्रियदर्शिनी absent. क्षितिश खुंटिया. Present sir. क्षितिश प्रेजेंट. Present sir. पद्मनाभ सामल, प्रत्याशा मिश्र absent. साई दिव्यकांत नायक, शेख आदिल Yes sir. प्रेजेंट. आदिति साहू, absent. अंशुमान नायक, Present sir. प्रेजेंट. चेतना ज्योति महाराणा प्रेजेंट. गौरव प्रसाद दास, Present sir. प्रेजेंट. ओम प्रकाश साहू, absent. Sir, 0017 present. रश्मि रंजन साहू, Present sir. 017 के. शेतालीन Yes, sir. प्रेजेंट. Yes, sir. Why you are not responding? रश्मि रंजन साहू. Sir, मैं every join Yes sir. अच्छा, रश्मि रंजन प्रेजेंट. सौभाग्य पात्र, Present sir. प्रेजेंट. तुषार रंजन साहू, Present sir. प्रेजेंट. अभिषेक आचार्य. Sir ता भाई एक्सपायर कर एजेंट तो से पड़ जाई छी. अर्णदा शंकर त्रिपाठी. Yes sir. अर्णदा लास्ट क्लास कहीं एब्सेंट थिलो. Nothing sir. अच्छा. आशुतोष दास. Yes sir. लास्ट क्लास एब्सेंट. ना तो प्रेजेंट थे तो नहीं तुम एब्सेंट पड़छ. बस क्लास चली. बबुल सर मोरी लास्ट सर प्रेजेंट ली. सर तो सर होची. एब्सेंट. भवानी शंकर बड़, एब्सेंट. चिन्मय प्रधान, प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. चित्तरंजन बेहरा, प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. गौरव बेहरा, प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. ओके. गुलशन बरी, इप्सिता दास,
Present, sir. Present. Malay Rautray. Malay Rautray, absent. Mujahid Khan. Present, sir. Present. Mrutyunjay Dani. Present, sir. Mrutyunjay present. Last class absent thilo kahingi? Mrutyunjay. 30th. Piyush Kumar. Piyush Kumar electronics. Present. Present. Rashmi Ranjan Sahu electronics. Yes, sir. So, मेरा total class, sir. Piyush Kumar 20. Sagarika Swai. Present, sir. Sagarika present. Sajan Kumar. Present, sir. Sajan Kumar present. Satyaprakash Swai. Absent. Sheikh Furkan. Present, sir. Present. Sir, मेरा कितना है लेने आते ना? Number 26. Sumant Barik. Present, sir. Sumant Barik. Shastri Vandita. Shastri Vandita. Absent. Abhishek Behera. Mechanical. Present, sir. Present. Devashish Behera. Present, sir. Devashish present. Imran Mirza. Present, sir. Present. Kaibalya Pradhan. Present, sir. Kaibalya present. Karan Kumar Behera. Present, sir. Present. Khitish Biswal. Present, sir. Present. Lalit Aditya. Present, sir. Present. तुमर एते क्लास कहीं absent ललित काली कहीं absent थिलो लास्ट क्लास Sir, last present, sir. देख तुम पूरा गुडाए absent रोज किसी पाठशाठ पढ़ा पड़ ना तुम आसो कथाबार्ता मनीष गुप्ता absent मोहन चुली Present, sir. present प्रियांशु नाथ Present, sir. present रूडी सुंदर रथ Yes, sir. ओके स्मृति रंजन जेना absent शुभम बारिक absent स्वागत प्रहराज स्वागत absent okay now all of you go through the pdf I have shared the pdf to you Swagat, present, sir. Sir. तुम तो सब absent रहो स्वागत तुम्हारा लास्ट 3टा क्लास absent Sir, take घरे sir problem अच्छा अच्छा ओके Sir, roll number 6 study. रोल नंबर 6 Yes, sir. धनंजय दास पढ़ी तो Yes, sir. Thank you. now all of you go through the pdf okay go through the pdf I have shared to you pdf टा सब देखो given all bpot question and answer okay all question and answer given to you and you will find the question as well as questions in the examination okay so we will discuss you see the question that we will discuss these are very very important because many questions are given question along with the answers are also given so the question that we will discuss that type of question might have asked in exam okay accordingly all of you prepare and the question that we will discuss you try to write in your class copy okay magnetic circuit means that is your which module magnetic circuit Third module. magnetic Third circuit module, which sir. module third module okay Third module, sir. okay and your transformer means fourth module okay
So third module and fourth module, you write all the questions and answered in your copy and you share me. Okay? And you can ask your doubt with voice recording. You can ask your doubt. Okay? But you try to write all the question and answer in your copy. Now come to the question number 1. You see, what is the relation between permeability and reluctance? We know the term permeability and reluctance in magnetic circuit. Okay, just like resistance in an electric circuit is resistance oppose the flow of current. In an electrical circuit, resistance opposes the flow of current. Okay. Similarly, in a magnetic circuit, reluctance opposes the flow of flux. In a magnetic circuit which opposes the flow of flux, that is known as reluctance. Okay, reluctance means opposes the flow of flux, but resistance means opposes the flow of current. So reluctance in magnetic circuit is analogous to resistance in electric circuit. Clear? Binori, बुझिपारछ? रिलक्टांस मु कौन कहली? रिलक्टांस इन मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Binuri Baral of first semesters BTech students under Dreams University, okay, can be analogous to one student of BTech first year of Silicon University. Accordingly, you can compare. Similarly, here reluctance in magnetic circuit is analogous to resistance in electric circuit. Okay, but current is actually flowing in a circuit, but flux is not actually flowing. धनंजय बुझिपारछ? धनंजय दास. Yes sir. कौन कहली? Current is actually flowing in electric circuit, but flux is not actually flowing. Rather, the influence can be realized. Okay. So similarly, आमे जदि रेजिस्टेंसर प्रॉपर्टी नवा कौन नवा? रेजिस्टेंसर प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R इक्वल्स टू रो L बाई A. क्लियर? R इक्वल्स टू रो L बाई A. ओके, और L by sigma A. Similarly, in a magnetic circuit, we can take reluctance. Reluctance similarly directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Area of cross section of the magnetic path. Okay, or we can write S equals to L by mu A. Mu is what? Permeability of the medium, and value of mu is mu 0 mu r A. Clear? Value of mu is what? Mu 0 mu r A. What is L? L is the length of magnetic circuit. A is the area of cross section. Okay, Saurav Mohanty. Saurav Mohanty. Yes sir. बुझी होची? Yes sir. Yes. So S we can write L by mu A. सेठी कौन लिखुले? R equals to L by sigma A. खातार लिखुछ सब ना नहीं? R equals to L by sigma A, but here in magnetic circuit we can write S equals to L by mu A, where L is the length of magnetic circuit or mean length of the path, magnetic path. A is your area of cross section of the circuit. Okay, and value of mu is mu 0 mu r.
where mu r is what? Mu r is your relative permeability. Where mu r is your relative permeability of the medium. Relative permeability can be defined as the ratio between absolute permeability of any medium to absolute permeability of air or vacuum or space. शुभम कानून को शुभम शुभम नेटवर्क पाऊनी अच्छा श्वेतालीन 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 प्रियदर्शिनी कौन मु कहली म्यू आर इज द रिलेटिव कौन म्यू आर इज द रिलेटिव परमियाबिलिटी which is defined as the ratio between कौन कितिश खुंटिया कितिश ट्रिपुली yes sir कौन कहली म्यू आर टा रिलेटिव परमियाबिलिटी which is defined as the ratio between absolute permeability of any medium to absolute permeability of air or vacuum or space. Value of mu 0 is how much? 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter. Clear? Value of mu 0 is always constant, which is absolute permeability of air or vacuum or space. Clear? Kitish? yes sir Okay. So this question is clear. What is the relation between your permeability and reluctance? So we can write like this. Reluctance is inversely proportional to the permeability. नहीं एस टा एल बाई म्यू ए हेले तो एस टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमियाबिलिटी. Clear or not? So this was the question asked in BPUT exam first semester 2003. Okay. Next come to what is the secondary to primary turn ratio of a single phase transformer excited by 230 volt AC supply with 12 volt output voltage at no load. Okay. शेख आदिल आदिल ये क्वेश्चन टा कौन पढ़िल what is the secondary or primary torque ratio of a one high phase transformer rated by 230 volts AC supply with 12 volt output voltage that no load. ताले व्हाट इज द सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न ताने सेकेंडरी माने N2 टर्न प्राइमरी टर्न N1. ओके secondary to primary turn ratio of a single phase transformer excited by 230 volt AC supply with 12 volt output. तामाने कौन secondary voltage टा केते 12 volt. ताले we know N2 by N1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 equals to K. K टा कौन voltage transformation ratio we have discussed in single phase transformer. While deriving the EMF equation of transformer, we know E equals to how much? RMS value of EMF induced in primary. E1 equals to 4.44 F phi m N1 volt. Yes or no? Similarly, RMS value of EMF induced in secondary of transformer. E2 equals to 4.44 F phi m N2 volt. अरे मैं EMF इक्वेशन डिराइव करथिले ना नहीं आदिल हाँ खातार अच्छी ना नहीं ना ऑनलाइन खाली यस सर एवरीथिंग यू राइट इन योर कॉपी. ओके EMF इक्वेशन संगे संगे देखी दो पेज नंबर एतिक अच्छी पलैगल संगे संगे कहल तुम जी ठकिब
तुम भाव सार कि जापर ना मुझे जहाँ कहले चलो ऑनलाइन माने तुम यू आर गेटिंग द बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं फ्रीली तुम बसिकी आराम रे बसिकी पेंट सार्ट पिंधा दरकार नहीं आराम से बसिकी लिखिपर बुझल जहाँ डाउट पचारि पार माने यू आर गेटिंग एनफ टाइम तुम जदि अननेसेसरी वेस्टेज योर टाइम देन यू विल सफर तुम को टीचर कि पेरेंट्स सफर हे नहीं पेरेंट्स देख दे आर पेइंग फॉर यू सो यू मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट फैसिलिटी एत दिन गरम है तुम घरे सब रहा आम जदि घरे रही न पढ़ा ताले पेरेंट्स कौन पैसा देले तुम देख पाठ पढ़ल पैसाटा कॉलेज कौन पाई दिया कि जानापी ना ना सो यू मस्ट नो ओके सो व्हाट एवर दैट वी आर शेयरिंग टू यू सो यू राइट इन योर कॉपी again and again you ask okay and that will be benefited for you so it is the secondary voltage is given v2 is given v1 is given ताले n2 by n1 equals to v2 by v1 we know for an ideal transformer v1 i1 equals to v2 i2 if we will consider about the transformation ratio voltage transformation ratio which is defined as the ratio between v2 by v1 nahi that is equals to n2 by n1 that is equals to i1 by i2 equals to k tenu n2 by n1 how to find that is v2 by v1 so output voltage 12 volt and input voltage 230 volt so 12 by 230 equals to 0.0521 आदिल बुझल आदिल अच्छा तुम एबे से कटकर दी भाई रोच ना घर पलि जाइछ घरे 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 बढ़िया राजा चाकरी पूरा खाई पी सोया कथा नहीं हैं अरे सी सी किसी बुझौती ना नहीं हैं तुम भाई किसी बुझौती ना नहीं सी हैं यस सर बुझौची ओके नाउ कम टू आदिति साहू आदिति Yes, sir. why you are absent 2 classes आदिति Last class present ଥିଲି sir. लास्ट क्लास प्रेजेंट कौन मनु मन कहल ये आबसेंट पड़ी क्लास जीरो फास्ट रु लास्ट जाए सार जिते डाक शुण मु तो तुमको फास्ट रु डाकिली तुम नॉट रेस्पॉन्डिंग हाँ यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग दैट इंडिकेट्स व्हाट दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव टू द क्लास क्लास माने क्लास बुझिल ना नहीं तुम कौन मागणार पड़ो कि ये हाँ आर यू स्टडिंग इन फ्री सर्विस so you must serious okay now you read this question number 3 पढ़ो आदिति Number 3. Yes, sir. An iron ring of mean length 15 centimeter has an air gap of 1 millimeter and winding 200 tons. A current of 1 ampere flows through the coil. Find the flux density. The relative permeability of iron is 300. okay that means an iron ring is given so this is a questions from your magnetic circuit module 3rd okay an iron ring of mean length we are discussing mean length of the magnetic part no ki s equals to l by mu a l ta kon mean length of the path so here l is given iron ring of mean length 50 centimeter has an air gap of 1 millimeter 1 mm okay millimeter माने कौन millimeter माने 10 to the power minus 3 okay जो millimeter दला we can convert into meter you can convert centimeter देछि we can convert into meter सब SI unit कर दवा centimeter means 50 centimeter that means
50 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, 1 millimeter माने 1 into 10 to the power minus 3 meter. Okay, so these given. So air gap length given and your mean length of the path given. Okay, 50 centimeter. And winding of 200 tall, that means N is given. Okay, a current of 1 ampere flows, that means how much current flowing? I equals to 1 ampere flow through the coil. Find the flux density. Okay, we know flux density. What is flux density? Flux density is normal flux per unit area of cross section. We know flux density B is given by normal flux per unit area of cross section. Unit is Weber per meter square. Yes or no? Weber per meter square. Okay, so to find out your flux density we require phi. Okay, so how to find the value of phi? We know MMF. MMF in a magnetic circuit, what we know? Jamiti EMF equals to IR. In electric circuit, EMF equals to IR. Yes or no? Applying Ohm's law. EMF equals to IR. I means amount of current flowing through the electric circuit and R is the resistance which opposes the flow of current. So we can write E equals to IR and function of EMF is drives current in electric circuit. So EMF equals to IR. Similarly, here we can write MMF equals to phi S. We can write MMF equals to phi S. Okay. सेठी EMF current flow होतला circuit रे, because function of EMF is drives current in electric circuit. Okay, here function of MMF is drives flux in magnetic circuit. तेणु EMF equals to IR लिखिले एठी लिखिया कोन MMF equals to phi S हैला. तेणु MMF जदि equals to phi S लिखिले MMF माने कोन number of turns into current. So Ni equals to phi S. So phi will be Ni by S. So we have to find the value of phi. Once we will find phi, then area of cross section is given. So we can find B equals to phi by A. So this is the answer. So now you go how to solve this. Okay. A is the area of cross section of the iron ring. Lg is the length of air gap. Air gap length is how much given? Aditi. Air gap length is given how much? 1 millimeter. Yes or no? 1 millimeter given air gap length. So 1 millimeter means 1 into 10 to the power minus 3 meter. Yes or no? Yes, sir. Then length of iron gap. Length of iron ring is given how much? Length of iron ring, that is given 50 centimeter. So length of iron path is 50 into 10 to the power minus 2 meter. You convert into SI unit. Okay, CGS unit ru ame SI unit सब convert कर देले. Okay, number of turn is given 200 and I is given 1 ampere. Now we can calculate reluctance for iron path. देखा गोटे जो चूड़ी जो नौच, okay, that was a iron, okay, rod or bar, and we have to make it bend. Finally we have to make it welded at the gap end. आमे जो चूड़ी जो बड़ा करछे माने कोन गोटे एंड रो सेटा वेल्डिंग ही न थाए कि तेणु सेटा को सपोज गैप हैला ताले टोटल रिलक्टेंस केते हबो ताले आयरन पाथ रो रिलक्टेंस प्लस एयर गैप रिलक्टेंस आमे दीटा जाक जदि मिसई देबा इफ विल ऐड टू आयरन पाथ एंड एयर गैप सो दैट इज द टोटल रिलक्टेंस because reluctance is what which opposes the flow of flux in the magnetic circuit. So reluctance of iron path we can take S equals to L by mu A. Mu A is mean
mu 0 mu r a. So iron gap length is 50 into 10 to the power minus 2 meter, and mu 0 value is always constant. Mu 0 ta absolute permeability of air or vacuum or space, whose value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter. Again mu r is given relative permeability of iron. Last को देखो, the relative permeability of the iron is given how much? 300. आदिति क्वेश्चन देछि ना नहीं? Yes, sir. हाँ, तेणु relative permeability of iron is given 300. ओके, तेणु आमे सब फॉर्मूला पके देले एबे. तेणु L by mu 0 mu r a. ताने मीन लेंथ ऑफ द पाथ आयरन केते हला 50 सेंटीमीटर, माने 50 into 10 to the power minus 2 मीटर. mu 0 value is always constant 4 pi into 10 to the power minus 7. mu r value is how much given? Iron pai deiji 300, and area of cross section that we do not know. Okay, so 1326.963 by a. Unit कौन होगा? ampere turn per Weber meter. Weber. Okay. Similarly, find the reluctance of air gap. Air gap कौन होगा? S equals to L by mu a. Sg equals to Lg by mu 0 a. So length of air gap is how much? 1 millimeter. 1 millimeter means how much? 1 into 10 to the power minus 3 meter. Yes or no? अरे 1 millimeter टा 10 to the power minus 3 meter ना नो? Yes, sir. अब mu 0 value is constant, that is 4 pi into 10 to the power minus 7, and value of mu r is 1. Relative permeability for air or vacuum or space always 1. कहीं की ना mu r टा mu by mu 0. Mu टा कौन? For any medium. In place of any medium, if we will take air medium, so air medium by air medium is how much? 1. So we can take mu r equals to 1. So mu 0 mu r a, that means mu r value is 1 here for air gap. Okay, so we can find the value of reluctance for air gap. G माने gap. Okay, so total reluctance is how much? S equals to SI plus SG. So we can find. Yes or no? But we have already known that mmf equals to phi s, or phi equals to mmf by s. mmf माने number of turns into current by s. Okay, तेणु n value n into I, n टा number of turn 200. Current, how much current flowing? 1 ampere, divided by reluctance is given, total reluctance 2123.141 by a. Okay, so you can find the value of phi. Once you can find how much flux flowing through the magnetic circuit, we know flux density is B equals to phi by a. So now you substitute the value of phi, and this is a. A cancel, so that we can find 0.0942 Weber per meter square. Aditi, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ansuman Naik. Ansuman? नहीं. चेतना ज्योति? Yes, sir. एटा बुझिल? Yes, sir. Yes, sir. कौन बुझिल बुझेल? Here area of cross section A is 2. Let A is equal to area of cross section of the iron ring, and Lg equals to length of air gap is given 1 millimeter, that is 10 to the power minus 3 meter, and Li is equal to length of iron path 50 centimeter, that is 50 into 10 to the power minus 2 meter. And N is equal to 200, and I is equal to 1 ampere. Yes. Reluctance of iron path is equal to S. What is N? Number of turns. Turn. Okay, very good.
n टा number of turn. And the Yes. reluctance of iron path SI is equal to Li by mu 0 mu r into A. That is Li is equal to 50 into 10 to the power minus 2 by 4 mu 0 values is constant, that is 4 pi into 10 to the power minus 7 into 30 into A. A is not given, so the value is 1326.963 by A into Ampere turn per Weber. turn by Weber. And the reluctance of air gap Sg is equal to Lg by mu 0 A. Here mu r is equal to 1, so the value is 10 to the power minus 3 by 4 pi into 10 to the power minus 7 A equals to 796.17 by A ampere turn per Weber. Weber, yes. Total reluctance S is equal to Si plus Sg, that is equal to 2123.141 by A ampere turn by Weber. So we know that MMF is equal to pi S, that is equal to Ni by phi S. MMF equals to phi S. MMF टा कौन? MMF टा हला number of turns into current. Number of turns into आमे जतले गोटे आयरन रिंग अच्छी सेटा को जतले मैग्नेटाइट करिया कोन करिवा ना n number of turn हेतिबो आउ I amount of current flow होतो. तेणु जदि n number of turn हला I amount of current flow हला ताले MMF प्रोड्यूस होबो. MMF is nothing but product of number of turns into current, Ni. Okay, Ni रो काम कोन? सी गोटे फ्लक्स दब. फंक्शन ऑफ MMF इज ड्राइव्स फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट व्हिच कैन फ्लो इन ए क्लियरली डिफाइंड पाथ. नहीं आम जमी लिखी दे EMF इक्वल्स टू IR. सिमिलरली हियर वी कैन राइट MMF इक्वल्स टू phi S. MMF माने कौन? Ni इक्वल्स टू phi S. आवर रिक्वायरमेंट इज phi. हाउ टू फाइंड phi? ना MMF by S. Ni by ओके. yes. Then So phi is equal to Ni by S. Ni is equal to 200 into current is provided 1 ampere. 1 ampere, yes. By yes. By 2123.141 by A is equal to 0.0942 A Weber. Flux yes. density B is equal to phi by A. Then phi is equal to 0.0942 A by A is cancelled out, and 0.0942 Weber per meter square. Okay, very good, excellent. So in this way you have to explain your friends so that easily you can understand. You try to explain this problem 10 times. Okay, all of you must promise that I will explain this problem to 10 of my friends. All of you clear? Gaurav Prasad. Yes sir. ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରମିଜ୍ କରିବି? I will explain this problem, okay, 10 times to my friend. ଜଣକୁ ମୁଁ 2 ଥରରୁ 4 ଥର ବୁଝେଇ ପାରିବି. ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? Yes sir. ଓକେ. ତେଣୁ ତମେ କେତେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇବ ଭାବିଛ? କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ଅନଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ. ତା ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିବି ସେ ହଁ ହଁ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଏରିଆ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିସନ୍, ଏଇଟା ମିନ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ପାଥ୍, ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ମୋତେ ଶୁଣାଇବ. ବୁଝିଲ? ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ଗଲେ ତୋତେ ଟିଫିନ୍ ଖିଲେଇଦେବି, ତୁ ଖାଲି ଶୁଣିକି ହଁ ହାଁ କହ. ବୁଝିପାରିଲ? ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ. yes sir କଟିଗଲା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏବେ କହୁଛି. ହଁ, ତେଣୁ you try to explain your friends. Okay, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ. yes sir. ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଛି? ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍. ତମର କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ହାଁ ସାର୍ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲି 2ଟା କ୍ଲାସ୍. ହଁ, 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲ, ଆଜି ଆସିଛ.
ओ आज किछि किछि Yes, बुझिलो ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ से मेडिकल रे रही को मेडिकल अछ तमे ସାର୍ ଧର୍ମଶାଳା धर्मशाला अच्छा तो धर्मशाला कहीं पद्मिनी पलि आसुन एटिकी ସାର୍ ଏଟା ପାଖ ହବ ଧର୍ମଶାଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ एटा पाख हौ हौ ठीक अच्छे से धर्मशाला रही ये जो वीडियो गुड़ा जहाँ सेयार कराऊँ है यू ट्राए टू अंडरस्टैंड है कानर से कौन इयरफोन ना कौन दिखती जो है ताकू देकी ଆଜ୍ଞା पूरा ସାର୍ भल कर शुणव एंड ट्राए टू एक्सप्लेन योर फ्रेंड्स जहाँ बुझिल ट्राए टू एक्सप्लेन योर फ्रेंड्स बुझीगला ओम ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तुम ना जा तुम कामटा उल्टा है अच्छा रश्मि रंजन साहू रश्मि रंजन अच्छी से Yes, sir. इलेक्ट्रिकल रश्मि अच्छी yes sir एबे आस एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख द हिस्टेरिसिस लॉस क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िल रश्मि रश्मि आज्ञा, sir. रंजन ये क्वेश्चन नंबर 4 टा पढ़ो The hysteresis loss in cold rolled gained obtained silicon steel is what when the supply frequency G the CYS find the hysteresis loss when the frequency is 60 CYS the flux density remains same. ओके वेरी गुड सो द क्वेश्चन इज व्हाट गिवन फास्ट कोटा क्वेश्चन टा कौन देइछि आगे देखियो व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ओके द हिस्टेरिसिस लॉस इन ए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील आमर जो ट्रांसफॉर्मर तैयारी होनी ट्रांसफॉर्मर कोर आमर जो मेकानिकल ब्लॉक पाखर गोटे ट्रांसफॉर्मर अच्छी रश्मि रंजन देखिछ आज्ञा सर कॉलेज रो को पाखर अच्छे कहलो ट्रांसफॉर्मर वेयर सिचुएटेड जो ब्लॉक 3 नहीं ब्लॉक 3 पछपटे से जो ट्रांसफॉर्मर दैट ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील हैविंग लो हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट कहीं ट्रांसफॉर्मर जेहेतु कोर अच्छी ओके ड्यू टू द टाइम वेरिएशन ऑफ फ्लक्स आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस अकर बुझीगला आयरन लॉसेस कहीं हम ट्रांसफॉर्मर रे लुहापाई हेनी व्हाई द आयरन लॉसेस कोर लॉसेस अकर ड्यू टू द टाइम वेरिएशन ऑफ फ्लक्स आयरन लॉसेस कैन अकर आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस कैन बी सबडिवाइडेड इनटू टू क्लास one is your hysteresis loss another is eddy current loss सौभाग्य पात्र शुणुच सौभाग्य पात्र से पार तुषार रंजन साहू yes sir ओके शुणुच ना नाई आज्ञा सर तेणु ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील having low hysteresis coefficient okay transformer having transformer टा कौन गोटे static device transformer is a static electromagnetic device which transfer electrical power from one circuit to another without changing frequency बुझी हो जी ट्रांसफॉर्मर इज ए तुषार कौन कहली ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी तमाने फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग कांस्टेंट ताले ट्रांसफॉर्मर टा कौन हम जानले स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफॉर्मर क्या है एक स्टैटिक डिवाइस है ठीक है कि नहीं तो इसमें जो लॉस होगा ओके वन इज योर आयरन लॉस और कोर लॉस अनदर इज कॉपर लॉस बट नो रोटेशनल लॉसेस व्हाई नॉट रोटेशनल लॉसेस बिकॉज दैट इज नॉट रोटेटिंग बट मोटर जनरेटर हैविंग रोटेशनल लॉसेस बिकॉज दैट इज ए रोटेटिंग डिवाइस हियर दिस इज ए स्टैटिक डिवाइस नॉट रोटेटिंग so only iron loss or core loss
another is copper loss. Again, iron loss or core loss can be subdivided into two classes. One is your hysteresis loss, another is your eddy current loss. Clear? One is your hysteresis loss, another is your eddy current loss. What is hysteresis loss? You see, when we have discussed about your BH curve or magnetic hysteresis, what we know? Initially that was iron bar. If we place in the field of solenoid, that will become magnet. तमन magnetized. Iron bar थिला आमे जदि if we place in the field of solenoid, if high amount of current flowing through that having n number of turns, so what is happening? Due to the application of magnetizing force, we can get a stronger magnetic field. Okay, B proportional to H or B equals to mu H, where mu is the constant of proportionality known as permeability of the medium. B equals to mu H or mu equals to B by H. Clear? Mu equals to B by H. B proportional to H or B equals to mu H. है तेणु हिस्टेरिसिस माने कौन ये जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज है. ओके, सो सम पावर लॉस विल बी देयर. Okay, power loss, and the power loss due to that is known as hysteresis loss. Okay, and hysteresis loss गोटे है hysteresis loss और गोटे है eddy current loss. Eddy current loss टा कौन? Eddy means some unwanted current, extra current we don't desire, but that is flowing, that is disturbing. जदि unwanted current flow है कौन हम? ओके, जदि एक्स्ट्रा करंट फ्लो हम कौन हम? दैट लीड टू द डैमेज ऑफ द डिवाइस. सो वी हैव टू मिनिमाइज दैट. हाउ टू मिनिमाइज दैट एक्स्ट्रा करंट? सो वी हैव टू चूज द मटेरियल हैविंग थिन लैमिनेटेड आयरन कोर. आम जदि पतला पतला जो नवा, इफ विल चूज थिन लैमिनेटेड आयरन कोर, सो एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड. सो वन इज योर हिस्टेरिसिस लॉस, अनदर एडी करंट लॉस. Hysteresis loss, okay, directly proportional to always frequency, but eddy current loss always directly proportional to frequency square. Okay, so here question is based on hysteresis loss. Hysteresis loss directly proportional to frequency. So P1 by P2 equals to F1 by F2. Okay, so here your P1 is given. Hysteresis loss for a cold rolled grain oriented silicon steel is given 40 watt. Okay, frequency is 50 cycle per second. Then F1 is 50. Then we have to find out the hysteresis loss under second case when the frequency is changed to 60 cycles per second. Then F2 टा जब 60 ही गला, ताले तमरो hysteresis loss will be how much? Okay, तेणु hysteresis loss directly proportional to frequency. Okay, so P1 by P2 equals to F1 by F2. So P2 will be F1 by F2. Okay, P2 will be F2 by F1 into P1. तेणु 40 into 60 by 50, that is 48 watt. In this way you have to find out hysteresis loss. यदि एडी करंट लॉस कही था ताले कौन करिया? एडी करंट लॉस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. हिस्टेरिसिस लॉस टा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट एडी करंट लॉस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. ओके, तो सर बुझी हो तो? यस सर. तेणु एमती हमको एटा दिस इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट अर्णदा शंकर त्रिपाठी. अर्णदा, यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन टा पढ़ो. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. A single phase transformer and 1100 secondary turns. The net cross section area of the core is 500 नंबर टा पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो. 5 नंबर. हाँ, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आउ थर पढ़ो. A single phase transformer has 40 prime
40 primary and the net cross section, the area of the core is 5 primary and secondary turns. The net cross section area of the core is 500 centimeter square. If the primary winding be connected to 50 hertz for 400 volt supply, calculate the value of maximum flux density in the core and the impeded in the secondary. And EMF induced in secondary. सार जो पढ़ा कहते आम धीरे धीरे पढ़ा आमर कौन जल्दी जा पहुँचार अच्छे कि हावड़ार एटा तो जनशताब्दी एक्सप्रेस नुह तेणु आम स्लोली स्लोली दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू मीन्स व्हाट आई एम टेस्टिंग यू हाउ यू आर रीडिंग एवं बर्तमान है कौन कहल बुझल ना हियरिंग इज इम्पोर्टाट सार जहाँ कहते मुझे अटेंटिवली शुणुची हियरिंग तापर है रीडिंग हाउ मच टाइम आई एम डिवोटिंग टुवर्ड्स रीडिंग कहते शास्त्र अध्ययन स्क्रिप्चर्स यू हैव टू स्टडी आ तुम किसी गोटे अच्छी गड़ 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 गाईदेल यहाँ कौन से पढ़ा जोटा पढ़ुच माने बुझी बुझिकी पढ़ुच बुझीपार ना अन्नदा शंकर पूरा धीरे धीरे तुमको और देख ये ग्रुप्र 65 पिला दे आर फॉलोइंग यू जड़े जी पढ़ुची देख दैट मीन्स अदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स 65 स्टूडेंट्स दे आर फॉलोइंग यू सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीड इन सच वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एमती हुआ कथा तर तर हबार किसी आवश्यकता ना है तेणु एवं देख ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 40 प्राइमरी टर्न तेना N1 गिवेन 40 बुझीगला अर्णदा ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 40 प्राइमरी दैट मीन्स N1 इज गिवेन 40 and 1100 secondary turn so N2 is given 1100 yes or no yes sir आ मु सबु थर तुमको कहबी yes or no तमे आ मझे yes कहले कोनटा असुविधा तेणु N1 is given 40 N2 equals to 1100 turn that means transformer primary is given N1 turn secondary is given N2 turn okay and frequency is given frequency देख लो net cross sectional area of the core is given if the primary winding is connected to 50 hertz तो frequency is given 50 hertz we know all over India power frequency is 50 hertz likewise this frequency is given here 50 hertz f equals to 50 hertz then E1 is given 400 volt E1 टा के if the primary winding 400 volt हाँ yes primary winding be connected to 50 hertz 400 volt supply तो primary voltage टा E1 equals to 400 and E2 is not given calculate the value of maximum flux density in the core and the EMF induced in secondary तो माने E2 हमको बाहर करियार अछि हैला we have to find out the value of E2 yes sir so we know तमें जो पढ़ अर्णदा शंकर yes sir तमें जो पढ़ुच कौटी पढ़ुच घरे पढ़ुच ना गछ मूल पढ़ुच अरे एबे कौटी बसच घरे पढ़ुच तो और घरे पढ़ माने तुम टेबुल पाखर खाता बही अच्छी सबू ताने नाई पाखर जहाँ जना पड़ुची आउ हैं अन्नदा आए चिटिंग कर दउची आउ देख EMF induced in primary ये लिखा है कौन we know that EMF induced in primary this is which value of EMF RMS value of EMF induced मु तुमको कहीं पचारुची because you have okay attended 34 classes out of 37 last class you are absent yes sir जेहेतु बेसी बेसी जे क्लास अटेंड करची that means he is sincere that's why my expecting also proportional okay then I am expecting more yes, that you have attended many more classes बुझिल तेणु जो मैंने सब बेसिक क्लास सागरिका स्वाई 35
मृत्युंजय दानी 33, 37 क्लास किए कर इप्सिता दास 37 क्लास। तेणु ओबियसली जार बेसी बेसी क्लास ओके एक्सपेक्टेशन विल बी देयर ओके। सो अकॉर्डिंगली यू मस्ट रेसिप्रोकेट। तुम्हें आशा कर मैंने सार मत निहाती भलिकी बुझेबे इम्पोर्टाट क्वेश्चन कहीदेवे तेणु आई मस्ट ट्रस्ट यू विथ यू ये सन आउ मुझे तुम्हें आशा करियो मुझे सेटा जदि ठीक ठाक फुलफिल न करी तो सार किसी काम नुह ये सन। सो अकॉर्डिंगली एवरीथिंग मस्ट बी रेसिप्रोकेट ओके। सो हियर मेंशन्ड EMF induced in primary means that is RMS value of EMF induced in primary. Value of EMF E1 equals to 4.44 F N1 phi m volt. Our unit कौन होगा volt N1 माने number of turns in primary. Phi m टा कौन maximum flux linkage because value of phi equals to at any instant value of flux is phi equals to phi m sin omega t. But here माने फ्लक्स भेरिंग साइनसोइडली आम जो ये इक्वेशन टा कौट पाइले EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर यस और नो ताल फ्लक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to maximum rate of change of flux is directly proportional to the EMF induced. तन ईटा proportional to d phi by dt तने चेंज इन फ्लक्स टा केते फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू phi m minus 0 divided by during what time flux ranges from 0 to maximum during 1 by 4f during 1 by 4f during 1 by 4f time flux ranges from 0 to maximum तापर पुणी कमी जाउछ तेणु से डेरिवेशन लु आमर एटा आसिला केते ना 4.44 f n1 phi m हला for n1 number of turn in primary RMS value of EMF induced in primary is given by E1 equals to 4.44 F N1 phi m volt. So phi m will become E1 by 4.44 F N1. Yes or no? Now you substitute the value. EMF value हमें जानिए primary voltage केते EMF induced 400 divided by 4.44 frequency is given 50 Hz, number of turn in primary given 40, so we can find 0.045 Weber. Eta kono phi m okay. And cross sectional area of the core is given, cross sectional area of the core is given how much 500 centimeter square. 1 centimeter je kete meter 1 centimeter equals to 10 to the power minus 2 meter. 1 centimeter means 10 to the power minus 2 meter. आशुतोष दास आशुतोष बुझुच आशुतोष चिन्मय प्रधान गौरव बेहेरा चित्तरंजन बेहेरा ये सब अटेंडेंस ऑनलाइन पार्टी अटेंडेंस पकेले चलले नहीं गौरव कहीं तो किसी कहूनी गौरव मुजाहिद खान मृत्युंजय दानी आज्ञा सर ये आम कौन बुझे मृत्युंजय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवेन 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तेणु 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर माने कौन तेणु 10 to the power minus 2 रो स्क्वायर ताले 10 to the power minus 4 सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज ए इक्वल्स टू 500 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर मृत्युंजय बुझल हाँ मृत्युंजय सर अरे बुझुच ना नाई किछि
अच्छा maximum flux density in the core, maximum flux density we know B equals to phi by A. ए पीडीएफ टा देखो P equals to phi by A. सर सर टाइम ହେଇଗଲାଣି सर किए किए कहूच टाइम ହେଇଗଲାଣି सर सर ଏବେ ମିନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାମ୍ ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ कार ओहो सॉरी ओ तुम केतले सरिया कथा कि 10:45 ଆଜ୍ଞା ओहो अच्छा अच्छा ठीक अच्छे ओके এইটা को आम सारदेवा खाली चला तेना बी एमटा फाइव एम बाई ए ओके तो मैक्सिमम फ्लक्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन सो यू कैन फाइंड 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर सो we know E2 by E1 equals to N2 by N1 our requirement is EMF induced in secondary so E2 will be N2 by N1 into E1 okay then N2 टा 1100 divided by 40 into 400 so we can find EMF induced in secondary is 11,000 volt बुझीगला इप्सिता तेणु एटा okay this problem you try to explain next class okay so all of you go through the tick mark question okay and try to ready to ask me questions okay try to explain your friends and any doubt you can share with me okay Ipsita you just share the attendance screenshot okay thank you all good day Thank you, sir. Thank you, sir. okay welcome थैंक यू सर all of you can leave now